अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्राफ्ट रियलम। और ये आज मेरा जो भतीजा है वो अपना फेवरेट कार्टून करैक्टर जो है ना बनाएगा, गोकू। इसको बहुत पसंद है, तो इसकी ये काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी बस इसको ज़रूरत थी, बाकी ये परफेक्ट जो है ना बना रहा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoke. यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक है इसकी, तो वो मैं इसको बता रही हूँ ताकि इसके लिए इजी हो कि एक साइड जो होती हैं ये बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ी सी गाइड करना चाहिए। तो ये मैं उसको बस थोड़ा सा समझा रही हूँ, तो बाकी परफेक्ट है। उसने काफ़ी अच्छी ट्राई की है, न्यू लर्निंग है। अब कलर के बारे में इसको बताऊंगी।
अब थोड़ा सा ये है कि ये वो कलर स्टार्ट कहाँ से करें ना, तो इसको मैं वो बता रही हूँ कि यहाँ से पहले लाइट कलर को यूज़ करो, और इनका कलर को कैसे करना है। ये समटाइम जो है ना, हम बहुत हार्डली कलर कहीं कहीं यूज़ करते हैं, पर इसको बहुत सॉफ्ट हाथ के साथ हमें हाथ यूज़ करना चाहिए अपने। काफ़ी अच्छा ये लर्निंग है इसके लिए, ये काफ़ी अच्छी उसने समझ गया है इस बात को। तो शेड का बताएंगे कि उसके जो कपड़े हैं वो उसका जो शेड है वो कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ डार्क है, तो उसको कौन से कलर उसको बताने हैं। ये थोड़ा सा डार्क कलर कौन सा यूज़ करना है, कैसे करना है, तो इस हिसाब से वो काफ़ी चीज़ इस ये सीख रहा है। यहाँ पर हम ब्लैक आउटलाइन करेंगे इसकी।
बैकग्राउंड में अब पावर शो करने के लिए मैं इसको वाटर कलर यूज़ करने के लिए कह रही हूँ। तो ये वाटर कलर से जो इसकी पावर शो करेगा, जिसमें जो ऑरेंज है और गोल्डन है और लाइट येलो है, वो यूज़ करेगी ये।